きのこきのこのこのこのこのനമസ്കാരം, ഞാൻ മൃണാൾ. മണക്കൂസ് അല്ലെങ്കിൽ മച്ചണൈസ്, മയണൈസ് എന്നും പറയും. അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് കാണിച്ചിട്ട് ഒരു 6 മുട്ട, കുറച്ച് പഞ്ചസാര, കുറച്ച് ഉപ്പ്, പിന്നെ ഒരു ലൈമിന്റെ നീര്, പിന്നെ ഒരു 1/2 ലിറ്റർ വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ഇങ്ങനെ മിക്സിയിൽ അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്തേക്ക് മെല്ലെ ചേർക്കണം. എങ്ങനെ? മെല്ലെ, ഒരുമിച്ച് ഒഴിക്കരുത്. മെല്ലെ ചേർക്കുന്നതിലാണ് കാര്യം. ആ കൺസിസ്റ്റൻസി കണ്ടാ പൊളി. Yo, this is how you make the perfect sunny side egg. Ooh. Tip number 1, you don't want your pan too hot or too low. This is what happens when your pan is too hot. It starts bubbling and the joint gets ugly. Ugh, we ain't serving that shit. And this is what happens when your pan is too cold. It's not hot enough, so it's gonna keep running and running and running. That's a no-no right there. Now you know what not to do. Let me show you the proper way. First, get yourself a non-sticky pan. Second, medium-low heat. And just a little bit of oil. Swerve that joint around. Swerve. This is my water test. When it does that, it means it's a little too hot. Now crack your egg with 2 hands. And then put it into another container. Check for little eggshells like this. Gently throw in your eggs. Another one. Be patient. And that's how you cook the perfect sunny side eggs. How to slice the chili. Here's this little wine. Cut that off. Look, your knife needs to be sharp. You understand? Don't do this forward and down at the same time. Slice right, they'll be nice and thin. Это тебе, моя маленькая толстушка. Короче, режем лучок, ложим в миску, добавляем куриный фарш. Далее солишь, перчишь, вертишь. Берешь кабачок, нарезаешь колясиками и вырезаешь серединку. Ложим их на противень и фаршируем фаршем. Сверху пошла сметанка, перчик, помидорчик. 180 градусов полчаса. Добавляешь сырок и еще 10 минут. Бомбический диетический обед готов. हमारी सबसे पसंदीदा सॉस में से एक है टोमेटो केचप। ये टमाटर जिसे मैंने रफली कट कर लिया है, इसके अंदर मैं थोड़ा सा चुकंदर भी डाल रहा हूं, थोड़ा सा प्याज। अगर आप अदरक, लहसुन और प्याज नहीं खाते, आप इस स्टेप को मिस कर सकते हैं। ये है गार्लिक, स्मॉल पीस ऑफ जिंजर, सम शुगर, विनेगर, सम सॉल्ट। इसमें अब हम डालेंगे सूखी लाल मिर्च और ये तब तक पकेगा जब तक कि टमाटर मैश ना हो जाए कंप्लीटली। टोमेटोज मैश हो गए हैं, पानी ऑलमोस्ट इसका सूख चुका है। इसे अब हम डालेंगे इस ब्लेंडर में। एंड इट्स डन। इसे अब हम छान लेंगे। लुक एट दैट, ऑलरेडी लुक्स लाइक अ केचप। लेट्स ड्रेन इट। अब इसे हम बॉटल में भर लेंगे। देयर, हमारी होममेड केचप डन। हेलो फ्रेंड, आज मैं बनाने जा रही हूँ पुलाव। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो सबसे पहले हम चावल को धुल लेंगे। चावल को धुल ली हूँ, इसे हम आधा घंटा के लिए रेस्ट होने देंगे। टोप गर्म हो चुका है, हम इसमें घी डालेंगे। घी गर्म हो चुका है, हम तेज पत्ता डालेंगे। अब हम इसमें लौंग और इलायची डालेंगे। ये दालचीनी है, ये भी हम डाल देंगे।
अब हम इसमें चावल डालेंगे। हम इसे 10 मिनट तक भूनेंगे। अब हम इसमें किशमिश डालेंगे। ये सूखा नारियल है जिसे खोपरा भी बोलते हैं, ये हम इसमें डाल देंगे। वापस 5 मिनट तक भूनेंगे। इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे, इसे मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा चीनी डालेंगे। ये चावल भुनकर हो गया है। हम इस गिलास से 4 गिलास चावल लिए थे। पानी हम इसमें 8 गिलास डालेंगे। पानी को हम अच्छे से गर्म कर लेंगे। पानी गर्म हो चुका है। अब हम ये चावल भुना हुआ इसमें डाल देंगे। इसका सेकेंड पार्ट भी देखिएगा। Не, ну а шо? Шикардосики, ребятки. Шоколадка как загадка. Режу нежно я ножом, белый, пористый, молочный. В рот стремится, очень точно. Кручу-мучу, запутать хочу. Не, ну а шо? Не, ну а шо? Товарищ, праздничный стол накрывай. Зови родных и близких. Горчицу и кетчуп скорей подавай. И главное блюдо – сосиски. Не, ну а шо? ठंडी के मौसम में अगर इस तरह के गर्मा गर्म क्रिस्पी और करारे वड़े चटनी के साथ मिल जाए तो मजा आ जाता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने 1 कप चना दाल और आधे कप पोहे को पानी में भिगो के रखा था। दोनों अभी अच्छे से नरम हो गए हैं, तो दोनों को अब हम मिक्सी के बर्तन में डाल देते हैं। साथ ही में हम 4 सूखी लाल मिर्च डालेंगे, 1 छोटा चम्मच जीरा, पाव छोटा चम्मच हल्दी और स्वादानुसार नमक डालकर अब हम इन्हें पीस लेते हैं। वड़े को कुरकुरा बनाने के लिए इसमें हम 1 बड़ा चम्मच चावल का आटा डालेंगे। साथ ही में हम 1 प्याज डालेंगे। अगर आपके पास प्याज नहीं है तो आप इसे ना डालें। बारीक कटा हुआ धनिया, 7 से 8 कड़ी पत्ते और हाजमे के लिए हम चुटकी भर हींग डालेंगे और आधा छोटा चम्मच अजवाइन डालकर सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हाथों को तेल लगा लेंगे और वड़े को इस तरह से हाथों पे बनाकर तेल में छोड़ते जाएंगे। आज को हम मीडियम फ्लेम पे रखेंगे और वड़ों को क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे। हमारे गर्मा गर्म बहुत ही टेस्टी वड़े बनकर रेडी हैं। दोस्तों, आज मैं आपको फटे हुए दूध से बहुत ही जबरदस्त रेसिपी बताऊंगी। तो सबसे पहले हम इस फटे हुए दूध को छान लेते हैं। ये जो पानी है इसे आप फेंके नहीं, ये बहुत ही हेल्दी वाटर होता है जिसे आप कड़ी बनाने में या फिर आटा गूंदने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे मैंने कपड़े पे बांध कर रखा था जिससे कि इसका सारा पानी निकल गया है और आप देख सकते हैं कि छेना बनकर रेडी है और ये कितना ड्राई बना है और देखिए चूरा चूरा भी हो गया है। यहाँ पर मैंने आधा लीटर दूध को 10 मिनट के लिए धीमे आंच पे पका के लिया है। अब हम इसमें छेना डालेंगे, साथ ही में 100 ग्राम चीनी डालकर इसे मिक्स कर लेते हैं। चीनी हमारी पिघल गई है तो अब हम इसमें थोड़ा बारीक कटा हुआ मिक्स ड्राई फ्रूट्स डाल देते हैं और खुशबू के लिए 1 छोटा चम्मच रोज वाटर डालेंगे। आप चाहो तो केवड़ा वाटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये पककर ड्राई हो गया है तो इसे सिल्वर फॉइल लगे हुए केक मोल्ड में निकाल लेंगे और जमने के लिए छोड़ देंगे। 2 घंटे हो गए हैं और ये देखिए जमकर रेडी है। तो जब भी आपका दूध खराब हो यानी कि फट जाए तो आप इस कलाकंद मिठाई को जरूर बनाएं। कंजूस है वे पूरा मक्खी चूस है, नेचर तो निरा खड़ूस है, वे कदे हंस लिया कर डुब जानिया। मैनू लहंगा ले दे। नाक बंद, खोटा खोटा बात बंद, बनना है तो बाप बंद, छोटे छोटा शाप बंद। एक कमाल की चीज दिखाऊं, मेरे टिकटॉक अकाउंट पे खाली एक वीडियो है जिसमें मैं अभी बात कर रहा हूँ। वो जाके मेरे फॉलोअर्स और टोटल लाइक्स चेक कर लो, दंग रह जाओगे। Такой обычный шоколад, а как желудок ему рад? Уже с утра ждет, ожидает, как сладко он во рту растает. Не, ну а шо? Okay, fine. Fine, you want to make churros, no problem, but understand these are dangerous. Small pan, 5 tablespoons butter in, 1 cup of water, 2 tablespoons of sugar. Heat on high heat. Make sure it's melted and bring to a boil. Turn off the heat. 1 teaspoon of vanilla, 1 teaspoon fine sea salt. 1 cup all-purpose flour. Stir. Till thick with 3 C's.
Now let this cool for 8 to 10 minutes, brother. 3 eggs, one at a time. Egg, mix, egg. Had to switch to a whisk. Egg, mix, and an egg yolk. Mix one more time. Till nice and smooth. Transfer to a piping bag with a star tip. Heavy bottom pot. Fry oil. Filled a little over halfway. It's cinnamon sugar, not that hard. 3/4 cup of sugar. 1.5 teaspoons of, well, cinnamon. Mix together. Heat to 375. Pipe 5 to 6 inch pieces. Snip. It's average churro size, okay? Repeat. Fry 4 to 5 minutes. Till golden brown and crispy. Remove from the oil. Add the cinnamon sugar. Toss while still hot. Repeat with the rest. Now these are some good looking churros, but now we're talking. Look at. ये दिखने में जितना क्यूट लग रहा है ना, उससे कई ज्यादा खाने में टेस्टी और हेल्दी है। सबसे पहले बाउल में हम 2 अंडे को तोड़कर डालेंगे। इसी में हम पाव छोटा चम्मच हल्दी डालेंगे, आधा छोटा चम्मच रेड चिली फ्लेक्स, आप चाहो तो कुटी हुई काली मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और सारी चीजों को अंडे के साथ अच्छे से फेंट लेंगे। अब हम इसमें बारीक कटा हुआ एक प्याज डालेंगे, साथ ही में 1 बड़ा चम्मच बारीक कटा हुआ टमाटर, 1 बड़ा चम्मच बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, 1 बड़ा चम्मच कद्दूकस किया हुआ गाजर, 1 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 1 बड़ा चम्मच बारीक कटा हुआ फ्रेशली धनिया और फाइनली 1 बड़ा चम्मच बेसन डालकर सारी चीजों को फिर से एक बार अच्छे से मिला लेते हैं। तो ये हमारा बैटर बनकर रेडी है। तो चलिए अब अप्पे बनाना शुरू करते हैं। अप्पे पैन के सारे खानों में आधा आधा छोटा चम्मच तेल डालकर इन्हें अच्छे से ग्रीस कर लेते हैं। इसी में हम थोड़ा थोड़ा करके बैटर डालेंगे। पूरी तरह से बैटर को नहीं भरना है और इसे ढककर धीमी आंच पे 2-2 मिनट के लिए दोनों तरफ से पका लेंगे। तो देखिए बहुत ही टेस्टी और हेल्दी अंडे से बने हुए अप्पे बनकर रेडी है। Okay, look, I got Pizza the Hut before. I'll do it again. 1 cup of water. 1.5 teaspoons of instant yeast. A little mixy. Sit for 5 minutes. 2.5 cups of all-purpose flour. 2 teaspoons of sugar. 1.25 teaspoon of fine sea salt. Whiskey business. Add your yeasty water and mix. Take it a rough dough. Put to a work surface. Keep kneading till nice and smooth. Medium bowl. 2 drizzle of olive oil. Shape your dough into a ball. Into your bowl. Plastic wrap lightly oiled. Cover. Rise at room temperature 1 to 2 hours. Italian tomatoes. Tomato. 2 cloves of garlic. 2 tablespoons of olive oil. Salt to taste. Pinch of sugar. Blend till nice and smooth. Pizza stone. Into the oven. 500 Fahrenheit. 45 minutes. Baking sheet. Dust generously with flour. Flour. Dump out your dough. Divide. 2 even pieces. And shape into a ball. Onto your sheet. Cover and rest. 30 minutes. Pizza peel with flour. Pizza dough. Flour on the top. Punch around the perimeter. Over the knuckles. Turn, stretch, turn, stretch. Little pizza sauce. Spread it out. Cheese. Pepperoni. Into the oven on the 5 minutes. Broil 2 minutes. Garlic oil on the crusty. Ooh-wee. Короче, погнали. Картошку в микроволновку на 13 минут. Сулугуни натереть на мелкой терке. Порезать лук. Готовую картошку достать, разрезать почти до конца. Серединку разминаем вилкой, солим, перчим, ложим сметану, сверху сыр и в микроволновку еще на минуту. Божественный картофель за 13 минут готов. Че смотришь? Готовь, иди. You're gonna thank me for this one. So, the best quarantine hack of all time, go to makemeadrink.com. Select all of the things that you have in your house right now. So you put in all the spirits, the wine, all the mixers, everything you have in your house. Chocolate, coffee, Tabasco sauce. So you have everything available to you in quarantine, and then you click the magic button, make me a cocktail. And then it shows you every cocktail you can make ever. I've been really wanting to try this. So you get a coconut, poke a hole in it with a screwdriver, clean it of course, then pour the juice out. Once you do that, put it in a Ziploc bag, then put it into another Ziploc bag, and then okay, that's it, nothing to it. We're gonna do it one more time. And make sure you do sound effects because it won't crack if you don't. Now just grab a spoon and start peeling it out. Now wash your coconut and cut it into long strips. Now cut up a lime and squeeze it all over. Just realized how many times I've said now. Grab some classic seasoning. I'm just kidding, don't come for me. It's called tahini, and pour it all over. You can choose between chamoy, Valentina, or both and just pour it all over. And you're done, let's try it. Okay, here we go. Wow! Grab some strawberries, raspberries, a mango, dragon fruits, 2 apples, a lime, lemon. Wash them,
cut them into small cubes. Side note, dragon fruit to me tastes like paper. So use it if you want, but I just use it for looks. Now pour all of it in a bowl. Now cut your lemon and squeeze half in. Now this, now that, now Boo, stop looking at me. Add about 1 spoon of preserves and mix it all together. Once you're done, it should look like this. Cover the bowl with something and put it in the fridge. Next, grab flour tortillas. Tortillas, okay? Oh yeah. Pour some olive oil on it and spread it on each side. You don't need a lot, so you can use what's left over for the next tortilla. You'll need 1/3 cup of sugar and a teaspoon of cinnamon. Mix it. Now sprinkle it onto the tortilla. Once they're covered on both sides, place them on a baking sheet. Preheat your oven to 350. Now bake it for about 7 minutes. I don't have a lot of time left, but part 2 is already up, so I'll see you soon. जो लड़की आपको नखरे दिखाती है और छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाती है और बिन बातों के रूठ जाती है, तो यकीन मानो वो लड़की से ज्यादा आपको कोई प्यार नहीं कर सकता। तेरे लिए दिल का टेलीफोन है बजता रिंग रिंग रा रे, हो मेरे दिल का टेलीफोन है बजता रिंग रिंग रा रिंग, हो मेरे दिल का टेलीफोन है बजता रिंग रिंग रा रिंग, हो मेरे। Hash browns are for wimps. You can do better. We're making a potato galette. It's French. Peel 1 large potato. Cheesecloth. Grate. Twist and wring. Wring out the excess moisture. Heat 8-inch skillet, medium-low heat. Add 2 to 3 tablespoons canola oil, peanut oil, or leftover bacon fat. Add half of the potato. Freshly grated Parmigiano Reggiano. Remaining potato on top. Salt. Cook 5 to 6 minutes until golden on the bottom. Turn up the heat to medium to make sure it's nice and golden. 1 to 2 minutes. See how it's nicely golden around the edges? It's time to flip. Flip. Add a little more oil so it doesn't burn. Cook medium-low heat 5 to 6 more minutes. Salt, pepper, parsley, Parmigiano Reggiano, dill. Oh yeah. ओ आंखें कहती है बैठे तू मेरे रूबरू, तुझको देखूं इबादत करता रहूं तेरे सजदों में धड़के दिल ये मेरा, मेरी सांसों में चलता है बस एक तू। इश्क दा रंग तेरे मुखड़े ते छाया, जदों दा मैं तके आए चैन नहीं आया। किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया, किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया, जी कर देखदा रवां, किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया। Grab some Oreos. You'll need about 36. Either put them in a Ziploc bag or a food processor and crush them. It should look something like this. Grab about a spoonful to save for later. Grab about 8 ounces of cream cheese and mix it in. After mixing, it'll look something like this. Now you'll need a baking sheet and line it with parchment paper. Roll the mixture into a ball and place it on the sheet. Make some space in your fridge and leave them in there for about 30 minutes. Meanwhile, grab another bowl and pour in some white chocolate chips. Put it in the microwave for about 30 seconds. Take them out and mix them around and repeat this until they're melted. After 30 minutes, take them out and put them on a stick. Now they're ready to be dipped in chocolate. Just like that. Put them back onto the parchment paper and pour your Oreo crumbs on them. They're gonna end up looking something like this. So yummy. Put them back into the fridge for 10 more minutes and they're done. Let's try them. Okay, here we go. Now you know how to make Oreo balls. Les poils étaient pignons, les vitons j'étais, et les jantons les opas, les gisons l'étaient, en pouvoir je les temps, les tisses. Don't you dare throw those away. We're making the best banana bread. I can't stress it enough. Measure like this. Sweet. Best way to measure. 1.5 cups all-purpose flour. 1 teaspoon baking soda. 1/2 teaspoon kosher salt.
3/4 cup unsalted butter. Make sure the butter's softened, not melted. 1 cup packed light brown sugar. Cream, medium speed, 2 minutes. 2 eggs. 1 teaspoon vanilla. Ripe bananas. The batter's gonna curdle. Don't do your worry. Funnel in the flour, low speed until combined. That way you don't make a mess. Spray 9x5 loaf pan. 45 minutes to 1 hour. Oh yeah. McDonald's McNuggets. Start with that chicken breast. Go ahead and cut it up into little cubes, and we're gonna blend it in batches, and we're gonna pulse it. You could use a grinder if you have one, but I don't have one. I'm guessing a lot of you don't have one. You could use a blender, works just as good. Season the meat with a bunch of salt and pepper, and then the key to shaping your nuggets is to keep your hands wet so it doesn't stick to you. So you feel me? We made a few McDonald's shapes, and we went off with some dinosaurs, made a country, and look at that. I don't know what that is. Throw it into the freezer for like 2 hours. For the dry mix, we're going to go flour, cornstarch, salt, pepper, onion powder, garlic powder, mix it up. For the wet batter, we're going to go eggs, half a cup of water, 1/4 cup of cornstarch, and whip that up. Then once your nuggets are hard, we're going to go dry, wet, and then leave on there. And then once you do that, you're going to heat up some oil. Once it bubbles around the stick, the wood, the chopstick, throw them into the oil. Make sure they don't stick to each other. Fry them for about 2 minutes each side. Take them out, and you got chicken McNuggets. Yes, sir. तुम कुछ अधूरे से हम भी कुछ आधे आधा आधा हम जो दोनों मिला दे तो बन जाएगी अपनी एक जिंदगानी ये दुनिया मिले ना मिले हमको खुशियाँ भगा देंगी हर गम को तुम साथ हो फिर क्या बाकी हो मेरे लिए तुम काफी हो बनगी देखो चीज कसुती यगज बन पानी ले चाली 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 पायल भी प्यारी लागे और खुड़का